my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all. Hello everyone, myself Nitesh Gavde, and this session is meant for those people who are coaches, trainers, HR professionals, or aspiring coaches who want to create a big impact as a coach. So let me start with a very simple question. How many of us want to impact more and more people as a coach? Raise your hand. Thanks, Pradeep. Thanks, Haritosh. Thanks, Anand. Thanks, Tanu. Thanks, Suresh. Super. How many of us want to impact people as a coach at the same time, set up a professional coaching practice out of it? Raise your hand. Super, super. When I say professional coaching practice, it means a paid coaching practice where you actually make good enough money, which you make normally in a profession or any other business. Super. Now, before we start, I want you guys to write down one question that is there right now in your mind, which you think, if I get the answer to this question, my coaching establishment, my coaching practice will be established. My coaching practice will start, it will flourish. Write down one question and I'll be honestly telling you whether we will be able to cover that in today's session or not. Type in the chat box what one thing you're looking out of this program. Okay, so Nalina says, am I good enough as a coach? Very good question. It will be answered. Rashmi Bhatia, I am a trainer, so wondering how I can become a coach in the first place. Perfect. This will be answered in today's program. Shambhavi Naik says, how to structure my program? It will be answered to a certain extent. Yes. Any other questions, guys? Type in the chat box. I will be able to tell you whether you will be able to manage. Akshata Kamath, how to handle social media to a certain extent? Yes. Pallavi Patil, how to influence people? Yes, we are going to cover that in detail. Pradeep from Delhi says, how do I create an impact among people? Very good, Pradeep. We will be covering that in the program. Rajesh Gangwani says, entry into corporate segment. Perfect. We'll be covering that as well. How can I become a leadership coach and how to create a coaching model? Suresh. Perfect. My story will help you answer that question. Hitesh, how to reach out to people? Perfect. Jinisha Bhatt is asking the most important question. How to get clients? We are going to answer that today, guys. Meha R says, how do I make a mark in the session? Perfect. We'll be covering that as well. Super. So as far as the program is concerned, more or less, we are going to cover whatever you have said. Pradeep Wazir says, how does coaching impact both professional and personal domains? Perfect. We will answer that. Amazing. So let us start with a very basic coach or client ka journey. How does coach and client meets? Okay. So एक blank page लो. Everybody take a blank page. Now, let's say you are here at the starting point and you have a passion to help. तो यहाँ पे नीचे लिखो passion to help. ये basic है. ये this is the only criteria that you need to become a coach. Passion to help. Now, if you have passion to help, the second step is this passion to help empowers you, inspires you to become a coach. So, एक arrow आगे बनाइए. And write down, become a coach. Your passion to help helps you become a coach. Done? Okay. Now, your client is somewhere here. Your client is at the other end. यहाँ पे नीचे लिखिए client. And your client has an unlived goal. Unlived goal matlab he wants to achieve something in his life. We will call that as unlived goal. Something like this.
So you are here, you have passion to help, you became a coach, your client is somewhere here, and now he has an unlived goal. For example, your client can be a teenager who wants to enter powerful and amazing college, who want to get amazing marks, who want to work on some of his skills. Your client can be um, a professional who want to get promotion, who want to become a CXO. Your client can be a mother who wants to do amazing parenting. Your client can be an entrepreneur whose unlived goal is to build his business to the next level. तो अलग अलग clients हैं, अलग अलग उनके unlived goals हैं. Now, how you reach from here to here? There are 3 steps. Step number 1 is आप coach बन गए, but ना ये लोगों को मालूम होना चाहिए. What you do, what kind of coaching you do, what is your topic, ये लोगों को मालूम होना चाहिए. So step number 1, write down here, creating awareness. Like this. So first step is creating awareness. Okay. Now, once you've created awareness, people come to know कि अच्छा, John is into this kind of coaching, Kundan is into this kind of coaching, Harishtosh does this kind of coaching, Shambhavi does this kind of coaching. Now, once you come to know about it, सामने से client नहीं आएगा, उसके लिए आपको और 2 step करने पड़ेंगे. Second step is write down, build trust. क्लाइंट को कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि ये जो बातें बोल रहा है ना, आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, ही इज अ जेन्युइन पर्सन, आई कैन वर्क विद दिस पर्सन. वो ट्रस्ट क्रिएट होना चाहिए. ओके, देन नाउ द लास्ट स्टेप बिफोर द क्लाइंट कम्स टू यू इज create value. You have to create some kind of value for the customer, for the client, so that उसको लगता है अच्छा यार, this value is really useful for me. Can I get in touch with this person and achieve my unlived goal? So यहाँ पे if you see the arrows are going in this direction, यहाँ पे उल्टा होगा. यहाँ पे once you see the value, the client will come to you. So this will happen something like this. And from here, both of you will reach here. Something like this. Okay, so this is the journey of coach client association in simple words. मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं किया है, बहुत सिंपल रखा है कि पैशन टू हेल्प के बाद बिकम अ कोच के बाद क्रिएट अवेयरनेस के बाद बिल्ड ट्रस्ट के बाद आएगा क्रिएट वैल्यू, फिर क्लाइंट आपके पास आएगा और आप दोनों अनलिव्ड गोल की तरफ जाओगे. ओके, नाउ दिस हैपेंस इन वेरियस स्टेजेस. तो ये स्टेजेस एक्सप्लेन करने के लिए आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आर द अवेलेबल टूल्स, हैक्स, strategies for a coach. And there are so many coaches today, right? Post COVID, coaching has boomed, but not everybody is actually practicing as a coach. Not everybody is doing this professionally. And to divide it, create this template, please, everyone. This is a magical template. At 1 o'clock sharp, you will fill everything here. And most important, you will find out the answer to your question. So एक काम करो, यहाँ पे लिखो evolve your coaching, फिर 2 कॉलम बनाओ. यहाँ पे लिखो n-coach, फिर लिखो k-coach. So there are 2 kinds of coaching mindset. One is n kind of a coach, one is k kind of a coach, and you will learn today that which type you are. Are you an n kind of a coach? Are you a k kind of a coach? Okay. Both of them are good. Right, wrong कुछ नहीं है guys. Okay, आपको सिर्फ देखना है आप कहां पर आते हो. आप N के टाइप में आ रहे हो, आप K के टाइप में आ रहे हो, और अगर आपको सच में you want to establish a coaching practice which
mindset will help you more. Okay. Now it is 10 minutes into the session. Let me be very, very honest. Now, we all are coaches here. You know how a coaching session goes. Coaching session में क्या होता है? पहले 40-45 minutes you create value and then at the end you pitch a program. Right? और फिर उसके ऊपर वो program के बाद ना the audience have to think कि करना है नहीं करना है और उसके against like anxiety develop हो जाता है. So मैं कुछ उल्टा करने वाला हूँ. So what I'm going to do is right now in the first 15 minutes I'm going to share my journey and I'm also going to do the sales pitch. So we have a simple program called as LPCC. I'm going to do that. And once that is done, then we are free. Then the remaining time, I will only create value for you. Are you with me, everyone? Thumbs up, please. Okay, so let's start with my journey. So typical Maharashtrian family I belong to, and a simple expectation कि engineering करना है, अच्छा job करना है. I did that. I did engineering. I did MBA. I started working with HDFC Bank as a manager. And after working, after getting amazing marks in 10th, 12th, good marks in MBA, HDFC Bank, I realized that I'm not enjoying it. This is not something which I worked. इतना मेहनत किया, रात रात भर इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया है, MBA क्रैक किया है, MBA में पढ़ाई किया है, सुबह सुबह 12-12 घंटे MBA जाके स्कूल कॉलेज में जाके मेहनत किया है, and still why I'm not enjoying. By the way, bank is good, job is good, but I could not identify कि why मजा नहीं आ रहा है. And वहां पे जाके ना एक बार क्या हुआ, एक मेरे कोचिंग क्लासेस से कारवा शुक्ला, उन्होंने मुझे एक बार गेस्ट स्पीकिंग के लिए बुलाया था. आई वेंट देयर, आई स्पोक for 10 minutes in front of students and parents, and I identified that this is something I enjoy. यहाँ पे I can create amazing value, I can make money, and this is what I should be doing for the rest of my life. So 2010 में ये job छोड़ा, I started Edify Labs. Now when I started Edify Labs, मुझे ये सब चार्ट वगैरह ये सब मालूम नहीं था guys, honestly speaking. मैंने सोचा I have a passion to talk, I have a passion to empower, I have a passion to inspire, let me start doing that. और मैंने मोटिवेशनल सेशन चालू कर दिए, बच्चों के मोटिवेशनल सेशन चालू कर दिए, पेरेंट्स के मोटिवेशनल सेशन चालू कर दिए. I started doing teacher faculty development program, and when I started doing all these things, मजा बहुत आता था. I used to enjoy a lot, but guys पैसे नहीं बनते थे. जो लोग ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं, वो अगर मजा बहुत आता है, अच्छा बहुत लगता है, पैसे नहीं बनते. और ये 2 साल हुआ, 3 साल हुआ. माय वाइफ वाज देयर टू सपोर्ट मी, शी वाज वर्किंग फुल टाइम दैट टाइम, तो घर चल रहा था अच्छा खासा. बट देन ना आई रियलाइज्ड कि आई हैव टू डू समथिंग एल्स. आई कैन नॉट बी डूइंग कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड ऑल जो पूरी दुनिया करती है. तो मैंने ना अपना नीश बनाना चालू किया. मैंने देखा कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में डिमांड है, आई कैन डू दैट, और बाकी कोई नहीं कर रहा. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई नीश एंड आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू पेरेंटिंग. और पेरेंटिंग का बहुत अच्छा स्कोप आया, पेरेंटिंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, एंड आई स्टार्टेड डूइंग अ प्रोग्राम कॉल्ड एज यू सो 7 सीक्रेट्स ऑफ पेरेंटिंग, एंड बिकेम अ ह्यूज हिट. अच्छा खासा, पहले आई यूज्ड टू गेट 7,000 रुपीज, 6,500 रुपीज अ डे, फिर 12,000 मिलने लगे पर डे, फिर 15,000 मिलने लग गए. ऐसे करते करते आई रीच्ड अ पॉइंट ऑफ 25,000. एंड बाय 2015, 16, 17 आई एस्टैब्लिश्ड माई सेल्फ एज वन ऑफ द टॉप कॉर्पोरेट ट्रेनर्स इन इंडिया. आई स्टार्टेड मेकिंग गुड इनफ मनी. And one day I realized, after establishing myself, जहां पे 1.5-2 लाख रुपए आराम से महीने का बन रहा था, I realized that I am doing transactional work. What do you mean by transactional work? Anybody here is a trainer? Already doing trainings in corporates? Please raise your hand. From the participants, Mamta, आप करते हो? ममता अनम्यूट कीजिए प्लीज. Yes, sir. Yes, Sir, Mamta. yeah, sir, from last 18 years, I'm associated with banks only, and I train on soft skills. सुपर सुपर. Yeah. ममता, आप मानती हो अपना काम ट्रांजैक्शनल बहुत है? Yes, sir. Like it is ट्रेनिंग like किया, हो गया, फिर वो अपने घर पे, हम अपने घर पे. वो बंदे के लाइफ में क्या हो रहा है, हम वो कितना ग्रो कर रहा है, जो आपने सिखाया है वो सच में अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वी डोंट नो.
हाँ, 100 में से 2 लोग ऐसे हैं जो अपने को 2-3 साल बाद मिलते हैं और बोलते हैं कि ममता मैम आपका सेशन अटेंड किया था, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा. दैट्स इट, राइट? Thank you, Mamta. So this I realized same in 2017. After working for 7 years, I'm still working on transactional basis. I'm not creating success stories. Write this down. Not creating success stories. And then I focused कि मैं क्या करूं जहां पे ना, instead of working with thousands and thousands of people but not making any big difference in their life, can I work with few people and make a tangible change in their life? So in December of 2017, I went back to one of our biggest clients, TCS, and I told them, hey guys, can you give me more time? I want to work with the participants for longer duration of time, and I want to create something where they can actually have tangible changes. And that is how मैंने उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया called as AAA, Awareness, Articulate, Amplify in 2017 का एंड में. एंड उसमें आई क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क कॉल्ड एज मेक इट हैपन. नाउ मेक इट हैपन फ्रेमवर्क इज अ वेरी सिंपल फ्रेमवर्क व्हिच हेल्प्स all of you to convert your knowledge into action. Okay, so I applied that framework. 9 हफ्ते का फ्रेमवर्क था, 2 हफ्ते का ट्रेनिंग था, बाद में इंटरवेंशंस थे. And we observed that 95% of the audience could achieve their results after 9 weeks. TCS was so happy. They awarded me as best strategic partner. I was super thrilled. This actually helped my training and coaching to a next level. And then I realized कि boss इसमें ना कुछ बड़ा हो रहा है. इसमें I now, instead of working with thousands and 2,000 people, I can work with 50 people and I can impact 40 people's life. And that is creating asset. पहले I was doing transactional work, now I was doing asset driven work. That is my asset. And ये प्रोग्राम करते वक्त तो this is how coaching happened to me. Coaching happened to me by accident. तब तक मैं ट्रेनिंग ही कर रहा था. So what happened was in one of my programs in February 2018, there was a participant in TCS called Sujata. Sujata came to me and told me that Nitesh, can you do personal coaching? तो मैंने बोला what do you mean? तो मैंने बोला can you help me in time management and work life balance? And to be very honest guys, तभी मुझे कोचिंग का मतलब क्या होता है मालूम नहीं था, कोचिंग क्या करते हैं मालूम नहीं था. I just understood कि चलो I can help her out in 2 of the problems that she shared. She was managing a team of 800 people and her daughter was in 10th standard, so she was not able to balance both the side equally. I said yes. फीस कितना लोगे? अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे फीस का भी पता नहीं था, तो मैंने सोचा कि 2,000 रुपए पर सेशन चार्ज करते हैं. और तभी मेरा ऑफिस नहीं था, तो आई थॉट कि लेट मी अगर कॉफी का कैफे शॉप में बैठेंगे तो कॉफी पियेंगे, 250 रुपए वहां पे खर्चा होगा, तो 2,500 खर्चा हो, 2,250 into 4. आई टोल्ड हर 9,000 प्लस सर्विस टैक्स. वो सर्विस टैक्स का जमाना था. आई टोल्ड हर दिस एंड शी सेड यस. सो आई वेंट बैक टू द कोऑर्डिनेटर ऑफ TCS. मैंने बोला कि ऐसा somebody has approached, am I allowed to take a coaching? She said if she is doing voluntary, why not? So मैंने बोला can I announce this in the batch that I am doing such kind of service? She said go for it. And I announced in the batch at the end of the session that hey guys, if anybody needs personal coaching, I am doing this for 9,000 rupees plus taxes for a 4 weeks coaching. 7 people enrolled. Now ना यहाँ पे ना एक नया चीज मुझे पता चला कि उसके बाद ना March, April, May, I started a personal coaching with the 7 people and something magical happened. I realized 2 things here. One, when I was working with these people, for the first time I realized कि इनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है. As a trainer ना, I was doing one-way communication, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ. Right now it is one-way communication, right? मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो. But आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके प्रॉब्लम्स क्या है, where are you coming from, what is your journey, I don't know. That is what I was doing that time as a trainer. But when I worked with Sujata, when I worked with Lakshmi, when I worked with Mittal, I realized कि सिर्फ बताने से आंसर्स नहीं आते, बताने से एक्शन नहीं होते. They also have their own problems, their own situation, their own internal resistances. And I started working with them और 3 महीने बाद बहुत अमेजिंग रिजल्ट आने लग गए. 6 महीने बाद बहुत अमेजिंग रिजल्ट आने लग गए. एंड आई फिगर्ड आउट कि कोचिंग में रियल लाइफ रिजल्ट आ रहा है. ये फर्स्ट लर्निंग था. सेकंड अमेजिंग लर्निंग वाज
These people were paying me 9,000 rupees per month into 7. That was 63,000 rupees per month. And this 63,000 became my consistent income for the next 1 year. All those who are into training, would you agree? Training में income is not consistent. कभी भर भर के आएगा, कभी कुछ नहीं आएगा. But जब मैंने coaching किया, I realized कि it is also supporting me professionally. And this, while this was happening, I realized in the early month of February, March 2018 that if I am creating so much value to them as a coach, I should also have a coach. And I got a coach for myself in April 2018, Pravin. We have worked before and I knew that he has very straightforward vision. He can help me have the same vision for myself. And with my coach, along with this program, we started developing more programs. वो जो Make It Happen था TCS का, उसको हम लोगों ने coaching में convert कर दिया. Now we were doing the same programs for teenagers. We were doing the same program for entrepreneurs, for professionals. And we started getting amazing results. And December 2018 में मेरा एक पर्सनल एम था कि 5 लाख रुपए का इनकम क्रॉस करना चाहिए. दैट स्टार्टेड क्रॉसिंग December 2018, January 2019, February 2019 onwards. एंड वहां पे माय कोच टोल्ड मी कि ये साल नया क्या करेंगे January 2019 में. आई सेड कि कोई सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, कोई कोर्स कर लेते हैं. ही सेड नहीं, कुछ एक्सपीरियंशियल करते हैं. तो आई सेड कि लेट मी गो टू टोनी रॉबिन्स US. And in the month of March 2019, I went to US to attend Tony Robbins live Unleash the Power Within, Los Angeles. Oh my God, क्या amazing program. एक वहां पे लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर है, 15,400 लोग वो प्रोग्राम में ऑन एन एवरेज प्राइसिंग ऑफ $2,000. नॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जो बातें बोल रहा था ये मैंने पहले उसके बुक्स में, यूट्यूब में कहीं ना कहीं सुनी थी, बट जो एक्सपीरियंस था ना, that was phenomenal. And when I got that experience, for that 4 days, it was mesmerizing. I thought, now I have to recreate something like this coming back to India. But one thing hit me the most. He said one line. I want all of you to write this line somewhere. He said that when you focus on your own success and happiness, your growth is always limited. When you shift your focus from your growth and happiness to others' growth and happiness, your growth becomes unlimited. And जब मैं वापस आ रहा था, I was thinking कि I am already doing coaching, I am already doing training, और क्या करूं? And then I realized कि मुझे September 2010 से January 2019 लग गया अपने आप को sustainable, अपने आप को अपना coaching practice establish करने के लिए. Can I do this for others? Can I help fellow coaches? Can I help fellow trainers convert their experience into a coaching program, not in 9 years, but in a matter of 18 months? And that is how LPCC was born. So here comes the sales pitch, guys. So the pitch is very simple. We have got a very simple program. ज़्यादा complex नहीं है. So this is, ये हमारा अभी नवंबर में लोनावाला में रिट्रीट किया था, ये वहां का प्रोग्राम है, ये वहां का फोटोग्राफ है. सो दिस इज द प्रोग्राम. तो ये हमारी कम्युनिटी है. वी आर राइट नाउ 168 कोचेस इन 15 कंट्रीज. व्हाट वी डू इज वी मूव पीपल फ्रॉम मी टू वी. सो वी हैव प्रमिला, राधिका, स्मिता. अभी तो इतने ज्यादा हो गए कि वी आर नॉट एबल टू फिट एवरीवन इन द सेम पेज, बट आई विल शेयर दिस विथ यू गाइस. गो थ्रू दिस आराम से. ये लोग पहले ये करते थे जब वो लोग मी पे फोकस थे. अभी जब से वो वी पे आ गए, दे आर नाउ बिग टाइम कोचेस and actually helping thousands and thousands of people every year. Now the next step is we first of all work in 4 stages. What are the 4 stages? Simple stage. First is a 9-week certification जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है. पहला 5 वीक इज ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ. ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इज आवर मेक इट हैपन फ्रेमवर्क. यहां पे हम लोग क्या करते हैं, वी हेल्प द कोच टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस व्हाट यू आर गोइंग टू कोच टू अदर्स. सी बहुत बार ना एज अ कोच हम लोग जो दूसरों को बोलते हैं ना, खुद नहीं करते. इट विल नॉट वर्क. सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 5 वीक्स में वी हेल्प पीपल टू identify who they really are, what is their core values, and how can they help others. But to do that, they first have to reach to that level first. So let me take a sharing.
Tejal. Tejal is our batch 14 coach right now in this batch. Tejal, share your experience of the first 5 weeks. It was really great because we got to know what our potentials are, what our core values are, and we got to know what we are doing and why we are doing exactly, and how we can channelize that to help others. Super, super. Thank you, Tejal. Now, guys, once these 5 weeks are done, you identify who you are, then we do something magical. See, I strongly believe in actions. तो जो next 4 weeks of certification होगा ना, यहाँ पे मैं आपको कोचिंग टूल्स दूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाएगा कि बच्चों को कोचिंग कैसे करते हैं, एडल्ट का कोचिंग कैसे करते हैं. बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि ना थियोरी से ज्यादा एक्शन इज इंपॉर्टेंट. सो वी एक्चुअली डू अ 7-day चैलेंज, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने नवंबर में एक्सपीरियंस किया नेक्स्ट बिग लीप वाला. तो ये 7-day चैलेंज इज एक्चुअली रन बाय द करंट बैच. Okay, so let me share. Meenakshi is here. Hi, Meenakshi. Meenakshi, आप मुझे बताइए, how was your experience of being a part of the 7-day challenge from the core team's perspective? So it was an eye-opener. That was the real work, and I understood what coaching is really about. Till then, it was just something, an idea in the mind. ना मीनाक्षी, जब आपने लोगों को बुलाया, लोगों को आपने इनवाइट किया, would you agree that वो लोगों के जो लोग आपका सुन के आए चैलेंज में, अभी वो लोग आपको एज अ कोच देखते हैं? Yeah, my image. बिकॉज आपका अभी क्रेडिबिलिटी चेंज हो गया, आपका इमेज चेंज हो गया. नाउ दे नो दैट मीनाक्षी अगर कुछ बोलेगी ना, इट इज वर्थ वाइल, उसको सुनना चाहिए. Yes, yes. Thank you, Meenakshi. So, guys, this is the first step where you actually work as a coach. You invite people, you engage them, and then you enroll them. Basically, I involved you in my sales process. This is the biggest USP of LPCC. सब लोग ना आपको ट्रेनिंग कैसे करते सिखाते हैं, आपको अपने सेल्स प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करते. वी डू दैट बिकॉज आई बिलीव दैट जब तक आप खुद वो प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपको नहीं समझ में आएगा. Once this is done, 9 weeks का certification हो जाएगा. You get 2 commercial licenses. Discover my coaching framework and make it happen framework. Discover my coaching you can use for students and you can use for adults. Make it happen framework you can use for SMEs and organizations. Now, once this is done, 9 weeks का certification हो गया. You become a purpose coach with us. Now starts the main story. This is just the foundation. Then comes our 15-month का ecosystem. I strongly believe, guys, कोई भी सर्टिफिकेशन, कोई भी कोर्स, इंक्लूडिंग एलपीसीसी, आपको कोच नहीं बनाता. आपको कोच बनाता है आपका एक्शन, आपका इम्पैक्ट. So what we do here is we work in 4 areas. We work in coaching skills. We develop your coaching skills in the 15 months. तो ये 15 महीने में क्या होता है? 3 हफ्ते के इंटेंसिव इनिशिएटिव्स रन किए जाते हैं विद आवर कोचेस. तो कोचिंग स्किल हो गया, सोशल इंपैक्ट हो गया, कोचिंग प्रैक्टिस हो गया, कोचिंग इक्विटी हो गया. एनीबॉडी हियर फ्रॉम बूटस्ट्रैप योर कोचिंग बिजनेस? प्लीज रेज योर हैंड. रेखा. So we did bootstrap your coaching business in the month of August, September, October. Rekha, quickly share what was your experience of bootstrap your coaching business? I got associated in April with LPCC, started my journey of coaching. Coaching का theory तो मिल गया, practicality client कैसे आएंगे, I was worried about that. In fact, I got the client as well and participated in this challenge of bootstrap your coaching business. And we designed our website, we were getting clients, we were getting teenagers for our coaching. So it was a practice ground. We made mistakes, a lot of mistakes. Live webinars, how to conduct that, how to process each and every minute details, we got to know about it. And the result was we have a lovely website for teenagers and we help teenagers around the world. We have 2 coaching programs for them. One is a small medium ticket and one is premium. And we are going to start a second batch in January. One is already in the process. Thank you so much. Super. So guys, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. मुझे ना आपको सिर्फ कोच नहीं बनाना है, मुझे आपको कोच बनाने के बाद आपका कोचिंग प्रैक्टिस चालू करने तक हैंड होल्ड करना है.
That's the intention of ecosystem. I will take one more example quickly. Anybody who attended the Rajeshwari. Rajeshwari, wait, Rajeshwari, I'll come back to you for a different sharing. Kundan, you traveled all the way from Bangalore for the retreat. How was the retreat for you? Amazing. I mean, the experience was phenomenal only because when I always felt that when like-minded people meet, there is some magic that happens. And these 3 days were really magical. So yes, I mean, the learnings that you get from being with the people who are already coaching is absolutely different. There are so many things we learned, so many sessions we attended. So it was really great experience. Thank you. Now, I would like to also share, guys, how this helps you not only build your coaching practice, but get bigger projects. Madhvi, could you quickly share how case studies help you get a big client in US? Yeah. So while I'm doing the case studies, I mean, after the 9 months of certification, so that is the first impact while doing the case studies, where I always meant to be that I'm not good enough of doing the coaching with the working professionals or the entrepreneurs or the other educated people, though I'm a pre-primary teacher. So these case studies has helped me that to put myself forward, where I helped a person where he has come out of his depression. He's a working professional. So in our language, so where due to that, I got this opportunity of going to US, though it is my profession only being as a abacus trainer, but that opportunity came from that case studies only. So it helped me to grow in that level. It is a big push for me. Super, Madhvi. So guys, उसके बाद 15 महीने का प्रोग्राम होता है. ये 15 महीने में the best thing that happens is you get to do all these initiatives every alternate month. जैसे अभी हमारा बैच 15 चालू हो जाएगा 24 दिसंबर को, बट उसी वीक में जो पुराने कोचेस हैं from batch 1 to batch 14, they will start working on unlived projects, and in the month of January, they will launch their own 7-day challenges for their own coaching. How to design those 7-day challenges, how to launch, what to pitch, how to get a paid coaching client will be done by us. So ये weekday nights को session किए जाएंगे, and in the first or second week of January, you will see all of our fellow coaches will be launching one challenge each. So this is the magic of the 15-month ecosystem. Now, once this ecosystem is done, this is the impact we have created so far as a community. Now, let me come to the time commitment. Now, in LPCC, during the certification of 9 weeks, the total time commitment I need is of 5 hours. 3.5 hours का Saturday को session होता है. आधे घंटे का personal mentoring होता है. 1 घंटे के assignment दिए जाते हैं. Now, the dates, 24 December, we are starting our first session of batch 15, and the orientation session will happen on the coming Sunday, that is 18 December, 9:30 a.m. 31st December का छुट्टी रहेगा. The fees, the total fees for LPCC batch 15 is 1.25 lakhs, all inclusive. There are no levels आगे. एक बार आप LPCC में आ जाते हो, that's it. And you get to enjoy the 9-week certification, the 15 months ka program, and most important, you get a community of 168 coaches to collaborate, to help you, to work with you. And I am available for each one of you one-to-one. Whenever you are stuck up in your coaching, you want to ask ये design कैसा है, इसका क्या pricing रखूं, ये corporate सब क्या बात करना है, I will be there for the next 18 months. Now guys, this is the pitch. This is the fees. Please note down this number 8080-024-024. You can schedule an induction call with Pradnya and we can take this forward. Done, guys. So this was the pitch. Now I can create value for you. So now let us come to the chart. Okay. The first step that you have to take to establish a coaching practice is write down finding my niche. Finding my niche.
Okay. Now, normally what happens is whenever people want to find their niche, what mistakes coaches do? तो जो भी N वाला side है ना, वो आपको avoid करना है. So the biggest mistake that coaches do is they start looking outside. कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या बिक रहा है, कौन सा कोर्स लोग ज्यादा खरीद रहे हैं. So write down here, focus outside. So you will see somebody is doing an amazing program on communication. Oh wow, चलो मैं भी communication पे workshop करता हूँ. You see somebody is doing a program on parenting. चलो मैं भी parenting पे program करता हूँ. ये तो मैं भी कर सकता हूँ. ये तो बहुत easy है. I can also do this. Now when you do this, what you focus more on the sales funnel. Sales funnel पे काम करते हो आप. आपका ना नीश पे ध्यान नहीं है. आपका ध्यान है कि क्या मैं 99 में बेच सकता हूँ, क्या मैं 499 में बेच सकता हूँ. What kind of Facebook ads will work? And trust me guys, if you keep on doing this, you are already, if anybody has already tried this, you agree, लोग आते हैं but coaching नहीं लेते हैं, आगे enroll नहीं करते कोई. Okay, what you have to do on this side, the K type of coaching, write down, focus inside. Your coaching niche should come from you. Step number 1, write down your own experiences, your own core values, and most important, your own audiences. Guys, I'll be very honest. LPCC mein, I don't want you to become a purpose coach like Nitesh. I want you to be your own version. See, you can never be like me, but you can be the best version of yourself. Okay, I'll have a sharing here. Radhika, are you there? Radhika. I think she's gone somewhere. Okay, let me work with Nilima. Radhika, you're here? Hi, Radhika. Hello. Hi, Radhika. Radhika, quickly share how have you identified your own niche? Oh, hi. Good morning, everybody. So I've joined LPCC back in 2020. We were the first lockdown batch. Okay, so till then, Nitesh used to conduct it offline, and I had met him long ago, but I told him I need to be on an online platform. Okay, so then joined there. The course has been wonderful. So it gave me the structure that I was actually looking for. I think as coaches, in our hearts, we know that we need to give, we need to care, we need to make a difference. But somewhere in the process, there is a structure to it, which is what most likely we miss out on. One, the course gives you structure. I think he has already explained that part to it. Now, question is, how do you convert all these learnings into actions and create something which is big enough that is your identity? Radhika, the sharing I need from you is the niche. How have you identified CXO incubator as your niche? So see, the way we kind of identified the niche is identifying what is your pain, going back to identifying your experiences, going back to, joining the dots of who you are, understanding yourself first, and kind of putting it all together to know that this is the space where you can be truly who you are, rather than trying to imitate somebody or copy somebody. I mean, while I took the framework from Nitesh, the way I would use it is going to be very different. So each one of you will have your own speciality. So that is what you need to find out. What is it that actually people know you as you? So there is no difference between you and your niche.
And this is what Radhika accomplished yesterday, guys. She completed a full-fledged 1 year of her own community called a CXO incubator. And I was so happy to see her yesterday. So this community is of Radhika's. ये राधिका ने खुद से खुद का community बनाया है. And she completed, I think, 1 year, Radhika, yesterday. Yes, Superman. How many people are there in the community now? 50. 50. So Radhika ka niche is very simple. Radhika helps people to become CXOs. That's her niche. अब ये niche कहाँ से identify किया राधिका ने? खुद के experiences से, खुद के journey से. So I want each one of you who want to become an established coach. Thank you, Radhika. I want you guys to identify आपका story क्या है, आपकी experiences क्या है, and I will give you the structure. I will give you the framework. I will give you everything. But वो niche आपका होना चाहिए. किसी और का niche मत copy करो. आप 100% दे नहीं पाओगे. That is step number 1, finding niche. Step number 2, write down, guys. Creating equity. Creating equity. Radhika, want to share something? Yeah, just I wanted to add that while we were in our group, 14 of us, each of us found our own niche. Like somebody is a health coach, somebody is a wellness coach, somebody is a maternity coach, somebody is a CXO coach, someone is a teenage coach. So I think each one of us have identified our own space, and the beautiful thing is I want to explain how community really helps you grow. I'm sorry, I have to barge in to tell you all. No worries. Because we feel we can grow alone. We can pay enough money and get all the courses in line. But believe me, when I started, I only had an idea. Even 2020, I knew I have to be a coach, but I didn't know. First 9 weeks में सब कुछ पता नहीं चलता है. But over a period of time, when you start involving yourself in all the activities, you will find your niche, and you will, and there will be process. It's a process. Pehla you will find something, then you will not be happy, then you will go to the next, then you will go to the next. And then in the funnel strategy, you will find out this space is my space. And it's a process. So 9 weeks के end में आपको सब कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है. So it is a process. Go through the full 18 months. And what you saw in that picture is actually something I dreamt 2 years back, and didn't know how to do it. Step by step, Nitesh really helps to handhold you through every step. So thank you so much for that. Thank you, Radhika. Thank you for sharing. So guys, as I told you, अकेले काम करने जाएंगे, मेरे जिससे 9 साल लगेंगे, साथ में काम करेंगे 1 से 1.5 साल लगेगा. Okay. Now comes the second step, equity. Now, what do you mean by equity? Can anyone tell me what do you mean by equity as a coach? Anyone? Raise your hands. What do you mean by equity as a coach? Let me ask Pradeep. Hi, Pradeep, New Delhi. Pradeep, what do you mean by equity as a coach? Sorry, I don't know. Fair enough. So guys, equity as a coach का मतलब क्या है पता है? Equity as a coach का मतलब है your credibility as a coach. Why should people come to you? Now, यहाँ पे ना what happens is on the end side, people get this equity through, write down, number 1, by doing courses. Number 2, by doing certifications. Number 3, by doing accreditations. Yeah, So I'm able to they- unmute. Hi, Pardeep. Pardeep, I'll come back to you. Yeah. So equity में ना, what will happen is people create equity by doing courses. अच्छे courses है guys, अच्छे certifications है, अच्छे accreditations है. But I'll tell you a secret of coaching. Your client does not care whether you are certified, what courses have you done, or whether you are accredited or not. Seriously, client को फर्क नहीं पड़ता. Client को सिर्फ एक simple चीज चाहिए कि मेरा जो problem है, can you empower me
to solve that problem. As simple as that. And to do that, you have to start expressing more. So on the K side, write down expression as a coach. Go on LinkedIn, guys. LinkedIn आज के दिन में is such a best platform. See, I'll tell you, आज से 11 साल पहले, तभी मैं जॉब में था, I wanted to do one session called as Purpose for 10 standard students. फ्री सेशन रखा था. ठाणे में एक सहयोग मंदिर है, वो हॉल बुक किया, 200 लोगों का चेयर लगाया, 40,000 पैम्पलेट बांटे. 4 बजे उठ के इतने इतने बंडल्स पैम्पलेट के लेके, वो होते हैं ना न्यूज़पेपर वेंडर्स, उनके पास जाके वो सुबह सुबह डालते हैं. ये सब किया. 6 वॉलंटियर का टीम लेके गया, सब जगह एरोज लगाए, पर्पस सेशन हियर, पर्पस सेशन हियर. कितने लोग आए थे पता है? 3 लोग. उसमें से एक वो प्रिंटर का बच्चा था जिसने वो पैम्पलेट प्रिंट किए थे. टुडे वी आर 67 people on a Sunday afternoon. Would you agree, guys, that most of you are here because of 2 reasons? एक, आपने मुझे पहले कहीं ना कहीं सुना है, आपने मुझे सुना है, पढ़ा है, या फिर आपको जिसने इनवाइट किया है उसको आप मानते हो, उसका कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी है आपके पास. Always remember, people will come to you with your equity only. So यहाँ पे पहला लिखो expression as a coach. Second लिखो action as a coach. See, अभी तक ना आपका एक इक्विटी है. You are a IT professional, you are a banking professional, you are a HR professional, you are a teacher, you are a homemaker. People have not, just because you have shown a certificate कि है मैंने प्रोग्राम कर लिया, आप कोच नहीं बनते. उनको देखना पड़ेगा आप एज अ कोच क्या करते हो. आप वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हो क्या, आप ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हो क्या, आप कोई वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो क्या, आपने बुक लिखा है क्या. एज अ कोच डेवलप योर इक्विटी. आई टेक अ ब्यूटीफुल एग्जांपल हियर. राजेश्वरी, yes Rajeshwari, now you are a perfect fit for this example. Rajeshwari, please share your experience, how you were here first on this side and then now how are you shifting to this side. Definitely, I would agree 100%, Nitish. I was an N coach before meeting you and the LPCC community. मैंने खुद के challenges run किए थे, 3 या 4 WhatsApp challenges, and I had good response, 50-75 people. I think, but I was not pitching any program sales, कुछ नहीं कर रही थी. I just ran the challenge and they felt there was a value addition. But then when I was into LPCC community and next big leap ka 7 days challenge bana, I had done couple of certifications before coming LPCC, like 4 to 5 international certifications, each costing more than 2 lakhs. So मैंने 10-12 लाख तो पहले खर्चा कर दिया था. And when I came to LPCC, I was part of the 7-day challenge myself. Reinvent Your Life challenge tha tab, June or July, I don't remember exactly. So I participated and I resonated so much with the challenge कि नहीं ये थोड़ा हटके है दूसरे certification से. And when you said the framework and everything, I know I was a sinking boat because मैंने certifications कर लिए थे, but I was not able to take actions at that point of time. And I really wanted where I am able to meet my coach directly and get the mentoring out of him. So that is how I resonated and I joined LPCC. And I think whatever I've invested with you, in terms of monetary, मैंने ले लिया है, लेकिन I've started taking action. From the N coach, I've moved to a K coach and happy that I'm with LPCC and I'm looking forward to scale up my coaching journey. Super. Thank you, Rajeshwari. Welcome on board. So guys, always remember, expression as a coach, action as a coach, and most important, create experiences for others. यहाँ से ना आपका कोचिंग इक्विटी बनता है. आपको लोगों के लिए ना कुछ एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, वरना जैसे हमारा 7 डे चैलेंज है. जितने भी लोग यहाँ पे 7 डे चैलेंज में आए थे, अनुपमा है, आई थिंक रश्मि इज देयर, वुड यू एग्री, महेंद्र इज देयर, कि एक कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट हुआ. तो वैसा एक्सपीरियंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, वरना लोग नहीं आएंगे. आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि मैं एसीसी हूं, मैं पीसीसी हूं, मैं एमसीसी हूं, मैं मार्शल गोल्ड्समिथ हूं, मैं फलाना ढिमका हूं. दो सर्टिफिकेशन आर गुड गाइस, सर्टिफिकेशन विल नेवर गो वेस्ट,
अगर आपने ऑलरेडी 4-5 सर्टिफिकेशन किए हुए हैं, अमेजिंग, दैट इज द नॉलेज, दैट इज द टूल्स दैट यू हैव, बट you have to take actions on it. Actions is where the results will come. Okay, now comes the third strategy is impact. Write down impact. यहां पे आके लोग अटक जाते हैं. Impact. If you really want to develop your coaching practice, you have to create more and more impact. Now let me tell you what is happening on the end side. End side पे क्या हो रहा है मालूम है? I'll be very honest, and those who are there, you will agree. जब बहुत सारा नॉलेज आ जाता है ना, जब बहुत कुछ सीख लेते हैं ना, you get into thinking mode. Thinking mode मतलब क्या? सोच रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे. Let me first work on my website. Let me first create my niche. Let me write a book. Let me do a TED talk. ये सब सोचते बैठ रहे हैं, हो कुछ नहीं रहे. So write down here, first step, thinking. Now what happens in thinking ना, जितना आप सोचोगे, उतना ना एंजाइटी बढ़ेगा, उतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, बट रिजल्ट नहीं आएगा. एंड देन उसमें और एक प्रॉब्लम क्या है, when you go all to this big programs, जहां पे वो बड़े जो कोचेस, मास्टर ट्रेनर्स होते हैं, ये कैसे आते हैं? ये सूट बूट में आते हैं. इनके पास 40-50 जन की टीम होती है. ये लोग अपना रेवेन्यू बताते हैं, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़. उसको देख के you feel as a coach, I am not enough. Write down here, I am not enough. Now guys, what will happen when you feel I am not enough? You will do more courses. You will do more programs. You will do more levels. Are you with me? So एक सिंपल सा मैं आपको मेथड बोलता हूं, अभी से स्टार्ट करना है, आज से. स्टेप नंबर 1 यहां पे लिखो, स्टेप बाय स्टेप एक्शंस. स्टेप बाय स्टेप एक्शंस. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, कल लिंक्डइन पे पोस्ट होना चाहिए. कम वॉट में दुनिया यहां की वहां हो जाए, एक पोस्ट तो लिखेंगे हम लोग एज अ कोच. ओके, एक्सप्रेस योरसेल्फ, टेक स्टेप बाय स्टेप एक्शन. व्हाट वी डू इन एलपीसीसी इज हम लोग धक्का मारते हैं. इन शॉर्ट, नहीं करो. I'll take one example here. Nilima is here. I want few of the older coaches. Nilima, Pramila, share how step-by-step action has helped you in the last 3 years. Pramila, by the way, is from our batch 1 coach. Yes, Pramila. Yes, step by step. Before coming to LPCC, I was a teacher and a homemaker. I had a lot of degrees, but never did anything in action. But one thing first, Nitesh told me, likho, book likho. So book likhne ke liye, he came to my house one day to visit something. There was emergency. So he came and he visited me and he said, "Isme book likhna tu, tera pen hai ye." And I started writing the book. In that time only, I made a blueprint and started writing. And within a span of small steps, I started writing a book. Plus, started making my website. Started working because he was pushing me. Ye kar, ye karo, ye kar, ye kar, ye karna hai. And then every day he was giving me direction to work. So I started within 3 years. I started my own 2 organizations. One is Enrich to Grow and one is Breathe, Believe, Balance. Plus, I wrote 2 best-selling books. They are in the market. Plus, I'm starting a new initiative for nurses and doctors. So this is happening very well because step by step, every day, we are in the market. We are showing our equity. We are showing our niche, working towards niche. And plus, we are doing every day one thing. What value I have created for myself and what value I have created for others. That is the question marks he had asked me long back, 3 years back. And that is written in my study table. So that is working towards me. Thank you, Nitesh. Thank you, Pramila. So guys, step by step action होगा.
कभी ना वो डायलॉग मालूम है सबको, रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे. प्रॉब्लम क्या है ना, एज अ कोच ना नॉलेज बहुत हो गया है, एक्शन नहीं हो रहा है. सो हियर वी हेल्प यू टेक स्टेप बाय स्टेप एक्शन. एंड सेकेंड, ये ना आई एम नॉट इनफ, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखो गाइस, I am enough. Simple. I am enough. Guys, I'll be very honest. कोच बनने के लिए एलपीसीसी का जरूरत नहीं है. आप ऑलरेडी कोच हो. एलपीसीसी कहां पे हेल्प करेगा? आपका कोचिंग प्रैक्टिस का जर्नी फास्ट फॉरवर्ड करेगा. दैट्स इट. Are you with me? I'll be very honest. So ना never ever be कि मैं ये कोर्स कर लूंगा तो मैं कोच बन जाऊं. कोचिंग बहुत सिंपल है गाइस. एक बंदा है जिसको एक प्रॉब्लम है, उसको यहां से यहां पे जाना है. You know how to take him from there to there. You help work with him, you coach him, you empower him. That person goes from here to here. That is coaching. अभी इसमें टूल्स है, फ्रेमवर्क्स हैं, हैक्स हैं, ये सब है. बट कोचिंग सिंपल वर्ड्स में is showing direction to a person so that he can travel his own journey. That's it. Okay, इसके लिए ना रॉकेट साइंस नहीं है. सो पहली बात तो ना, वी बिलीव इन एलपीसीसी, स्टार्ट विद दिस, आई एम इनफ. ओके. सेकेंड स्टेप इज व्हाइल क्रिएटिंग इम्पैक्ट. से बहुत बार क्या होता है, अभी देखो अभी ना कितना टाइम बचा है, लास्ट के 3 मिनट है, आई विल एक्सटेंड बाय 5 मिनट्स. अभी ना यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि अभी ना नितेश एंड में ना कुछ डिस्काउंट ऑफर लाएगा. होता है ना, अब क्या भी करो तो 1.25 लाख का प्रोग्राम 75,000 में मिलेगा, 50,000 में मिलेगा. वी डोंट डू दैट. यू नो व्हाई? बिकॉज व्हेन यू गो टू अ प्रोग्राम और वहां पे बोलते हैं 5 लाख का प्रोग्राम, अब भी क्या भी 50,000 में मिलेगा. दैट इज ड्राइविंग यू थ्रू फियर. वो आपके फोमो पे काम करते हैं. व्हाट इज फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट. एंड जब आप एक कोच ही बनते हो ना फियर ऑफ मिसिंग आउट से, तो आप लोगों को भी फियर ही दोगे. सो ना हमारा प्रोग्राम का प्राइस 1.25, वो 24 दिसंबर तक 1.25 ही रहेगा. अगले बैच में 5,000 रुपए से बढ़ा देंगे. ओके, फीस कम नहीं होगा. देयर आर नो डिस्काउंटिंग ऑप्शंस. हाँ, इफ यू हैव सर्टेन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट वी विल डू इंस्टॉलमेंट्स, बट डिस्काउंटिंग ऑप्शन नहीं है. I strongly believe that never ever work. See, coaching is a very empowering work. यहाँ पे fear नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट कोच के अंदर तो नहीं होना चाहिए. So यहाँ पे लिखो fear driven. यहाँ पे लिखो, ए साइड पे लिखो मीनिंग ड्रिवन. जैसे ना when I went to Pramila because she was critically ill and she was in a very bad state physically and emotionally. I told her a very simple thing. Pramila, you are a teacher, you are a coach. Why this must have happened to you? There is a message, and that message is you have to overcome this illness and you have to share with others how you have overcome this illness. That is called as the meaning of life. अगर सच में आपको अपना पर्पस फाइंड आउट करना है ना गाइस, आपको आपके पेन को पर्पस में कन्वर्ट करना है. मेरे जो 3 बेस्ट सेलिंग प्रोग्राम है, डिस्कवर माय कोर, टीनप्रेन्योरशिप, एलपीसीसी, ऑल ऑफ देम आर नथिंग बट माय पेन. डिस्कवर माय कोर कहां से आया? मैंने 10th स्टैंडर्ड से लेके एचडीएफसी बैंक के जॉब तक सब कुछ वो किया जो दुनिया बोल रही थी, एंड स्टिल आई वाज नॉट हैप्पी. सो आई क्रिएटेड अ प्रोग्राम डिस्कवर माय कोर वेयर आई नाउ हेल्प पीपल आइडेंटिफाई हु दे आर एंड देन दे टेक देयर करियर डिसीजंस. एलपीसीसी कहां से आया? मुझे कोचिंग एस्टेब्लिश करने में 9 साल लग गए. उसी को मैं अभी लोगों को हेल्प कर रहा हूं 1 साल 1.5 साल में हेल्प करने के लिए. दैट इज एलपीसीसी. व्हाट इज टीनप्रेन्योरशिप? टीनप्रेन्योरशिप जब मैं टीनेज में था, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, मैं अपने पापा के साथ पार्ट टाइम जॉब करता था. जब पापा 2002 में गुजर गए, आई स्टार्टेड वर्किंग विद कार्ला शुक्ला क्लासेस एज अ पेपर चेकर, एज अ सुपरवाइजर. एंड द मोर आई डिड ऑल दिस थिंग्स, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा फियर ऑफ अर्निंग मनी चला गया. एंड दैट इज व्हाट वी हेल्प टीनेजर्स नाउ टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस एंड अर्न मनी एंड क्रिएट इम्पैक्ट. So always remember, you don't have to go outside guys. सब कुछ अपने अंदर है. You have to find out what pain have you gone through. उसमें से दूसरों को हेल्प करो. Create that as a niche and convert that into a coaching program. Okay? This is how you create impact. Now while doing this, एक mistake हो रहा है सबसे, and that mistake is
the most important mistake why coaches are struggling big time is all of them are working. Write down on the N side. Job mindset. What do you mean by job mindset? Let me ask someone. सुजाता मित्तल. हाय सुजाता. सुजाता क्या लगता है आपको जॉब माइंडसेट एज अ कोच क्या होगा? Exactly, I cannot say. एक जॉब माइंडसेट क्या होता है बताओ? जॉब इज गुड राइट, जॉब इज नॉट बैड. एक हाँ, जॉब में माइंडसेट कैसे होता है? जॉब में माइंडसेट ये रहता है कि मुझे इसी से कमाना है. नहीं और ये मतलब ठीक है. Who would try? महेंद्र. महेंद्र बताइए जॉब माइंडसेट क्या होता है? Job mindset is if I work, then I need to get money. ओके, वेरी क्लोज. रश्मि, जॉब माइंडसेट क्या होता है? You're just restricted. You don't have that ownership and the sense of responsibility and connection. It's like, ठीक है, करना है काम करना है बस. At the end of the day, after 5 p.m., 6 p.m., you're detached from it. वेरी गुड, थैंक यू रश्मि. नहीं, जॉब माइंडसेट मतलब क्या मालूम है? मैं जॉब पे आ गया हूं, अभी आपको मुझे काम लाके देना है, मैं काम नहीं ढूंढूंगा. आर यू गेटिंग? यही होता है ना जॉब में. यू गो, यू टेक दैट पोजीशन, यू लर्न, यू गेट द जॉब. तो लोगों को क्या लगता है कि मैं सर्टिफिकेशन कर लूंगा, मैं एक्रेडिटेशन कर लूंगा, मैं ये सब कर लूंगा, वेबसाइट बनाऊंगा, लोग मेरे पास आएंगे. लोग आपके पास नहीं आते गाइस. यू हैव टू डेवलप ऑन द अदर साइड, राइट डाउन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट. एंड मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि व्हाई आई हैव बीन सक्सेसफुल इन कोचिंग इज दैट बिफोर कोचिंग आई हैव रन एडिफाई लैब्स फॉर 9-10 years. मुझे मालूम है कस्टमर लाना पड़ता है, कस्टमर सामने से नहीं आता. एंड दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग टू एलपीसीसी नाउ कि गाइस सामने से कोई नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको मेल भेजना पड़ेगा, आपको इनवाइट करना पड़ेगा, सामने से कोई नहीं आएगा. ओके, एंड व्हाइल डूइंग ऑल दिस थिंग्स ना, रिमेंबर वन थिंग. Why are you doing coaching? The original passion is to help. Okay. Now let us connect this with अपना this chart. ये वाले चार्ट को इसके साथ कनेक्ट करते हैं. So ये जो स्टेप 1 था गाइस, बिकम अ कोच के बाद क्रिएटिंग अवेयरनेस, इसके ऊपर लिखो दिस इज योर फाइंडिंग निश. दिस इज योर फाइंडिंग निश. सेकेंड स्टेप है बिल्ड ट्रस्ट, उसके ऊपर लिखो बिल्ड इक्विटी. आया? बिल्ड इक्विटी. एंड यहां पे क्या आएगा? क्रिएट वैल्यू के ऊपर क्रिएट इंपैक्ट. ओके. नाउ रिलर का रिवील. ये मैंने लिखा है ना एन कोच के कोच. क्या लगता है एन का मीनिंग क्या होगा, के का मीनिंग क्या होगा? ऑल द नॉन एलपीसीसी पार्टिसिपेंट्स विल शेयर. रेज योर हैंड. एन का मीनिंग क्या होगा, के का मीनिंग क्या होगा? एन कोच क्या है, के कोच क्या है? हु विल आंसर? ट्राई करो. लेट मी टॉक टू आनंद. यस आनंद. I think N I couldn't guess, but K is knowledge coach. N is K is knowledge coach. No, Anand. Who try? Try करो. सुजाता मित्तल. हाँ जी सर, सुजाता. सुजाता अनम्यूट कीजिए. हाँ. N is where you are right now. हाँ. And K is where you want to go but you are not able to go. No, N का फुल फॉर्म क्या है? Full form. वही पूछ रहा हूँ मैं. ठीक है. सचिन, आपको आंसर पहले से नहीं मालूम है ना, पहली बार ट्राई कर रहे हो राइट? हाँ सचिन बोलो. Is it like N is a novice coach and K is a knowledgeable coach? नहीं नहीं नहीं, वेरी क्लोज. चलो लेट मी टेल यू आंसर. सो गाइस, आई एम देसी आर्ट हार्ट. देसी आर्ट हार्ट. आई लव टू टॉक इन हिंदी इंग्लिश मिक्स. सो एन का मतलब है, राइट डाउन,
नाम का कोच। नाम का कोच मतलब क्या है? जो होता है टाइटल वाले कोच, जो टाइटल जमा कर रहे हैं, वो मिलते हैं ना पार्टी में, क्या करते हो तुम? आई एम अ लाइफ कोच, यू नो। अच्छा, कितने क्लाइंट है तुम्हारे? नहीं, अभी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। सो दे आर बिल्डिंग देयर टाइटल, दे आर बिल्डिंग देयर ईगो, दे आर बिल्डिंग देयर नाम। एंड व्हाट इज के गाइस? काम का कोच है। के इज, यस यू गॉट इट राइट गाइस, के इज काम का कोच। इसको फर्क नहीं पड़ता मेरे पास सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, मेरे पास एक्रेडिटेशन है कि नहीं है, कैन आई हेल्प पीपल, मेरा वेबसाइट है कि नहीं है। हम लोग ने बूटस्ट्रैप में कोचिंग बिजनेस में गाइस इंस्टाग्राम पे पहले मार्केटिंग करके लोगों को ले आया, प्रोडक्ट रेडी नहीं था, सेकेंड मंथ में प्रोडक्ट बनाया है, एंड थर्ड मंथ में लॉन्च भी कर दिया। वर्क पे फोकस होना चाहिए, काम पे फोकस होना चाहिए। जब तक आप नाम वाला कोचिंग करोगे ना गाइस, नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग नाम का कोच इज बैड, बट अगर आप नाम के कोच में हो, प्लीज, नोबल प्रोफेशन है अपना, वी एक्चुअली इंपैक्ट लाइव्स, शिफ्ट हियर, एट द सेम टाइम मेक मनी। सी एलपीसीसी में ना वी ओनली डू 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, फ्री प्रोग्राम्स एंड प्रीमियम प्रोग्राम्स। हम लोग 99, 299, 499 का प्रोग्राम करते ही नहीं है, वहां पे कमिटमेंट ही नहीं है। ओके, सो माय रिक्वेस्ट, इफ यू आर हियर, मूव फ्रॉम हियर। नाम का कोच यहां पे कैपिटल लेटर में लिखो गाइस, विल मेक यू डेवलप योर कोचिंग। ये कोच बना देगा आपको, बट काम का कोच विल मेक यू डेवलप योर कोचिंग practice. Okay, and how LPCC helps you is here. अभी ये चार्ट देखो एवरीवन, आपको लगता है ये इतना स्ट्रेट टाइप होगा रियल लाइफ में? अगर किसी ने सीरियसली कोचिंग किया है ना, आपको मालूम होना चाहिए स्ट्रेट नहीं है। ये कैसे होता है लाइफ में? इट हैपेंस समथिंग लाइक दिस। यहां तक तो स्मूथ है, बट इसके बाद ना दिस गोज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर आप अकेले करोगे तो आपका जर्नी ऐसा रहेगा। दैट्स द रीजन इट टेक्स 9-10 years. But when you are doing with a coach, with a community, with a mentor, I'm not again saying it will be straight, it will be less up and down. So it will go something like, okay? Super guys. So all those who are interested, take down the number 8080024024. ये मेरे कलीग का नंबर है 8080024024. Her name is Pradnya. Message her and tell her that I am interested in talking to Nitesh. So how it will work is, we have an orientation call with all the participants. So जिनका अभी तक कॉल हुआ नहीं है, आप एक ओरिएंटेशन कॉल बुक करो, we'll connect, we'll discuss, let me understand your journey, let me understand where you want to, what you want to do as a coach, and then I will explain you how LPCC will help you fast forward this journey. Okay, that's my time guys. Thank you here, thank you for being here, and looking forward to see you in the 15th batch on 24th of December. Thanks a lot.